हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं आपको पाइथन के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। हमारा एक न्यू बैच आ रहा है जो कि 4 मई को लॉन्च हो रहा है और इस डेट पे आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आप इनरोल कर सकते हो अभी भी। आपके पास 28 अप्रैल तक का टाइम है टू गेट द डिस्काउंट इन दिस कोर्स and for the demo purpose you will connect with our team for MDE team to get the link for the demo. So if you want to get the demo you can connect with our team. सो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि पाइथन तो मुझे सीखना है बट हमारा जो रोड मैप है, हमारा जो स्ट्रीम है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में है। फॉर एग्जांपल दे जस्ट वांट टू डेवलप आवर application based on the python. Sometimes they want some kind of automations. Sometimes they want to learn the Python for the data engineering purpose, for the machine learning purpose, for the data scientist purpose. So depend on the requirement. So there are different streams are there, right? So for opting all those stream, किसी भी स्ट्रीम में जाने के लिए आपको पाइथन की बेसिक से इंटरमीडिएट तक नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट? अगर आप न्यू है पाइथन में तो एटलीस्ट उसके सिंटैक्स क्या होते हैं, बेसिक सिंटैक्स, राइट? व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द मेथड, डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड एडिशनली ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, मेथड्स। सो अगर आपको किसी भी स्ट्रीम में जाना है, किसी भी स्ट्रीम में आपको डायरेक्शन पकड़नी है, देन फिर आपको पाइथन तो आनी ही चाहिए। और पाइथन की बेसिक टू एडवांस क्लासेस 4 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। आप आइए, ज्वाइन करिए। यू कैन टेक अ डेमो ऑल्सो इफ़ यू वांट, राइट? एंड यू विल गेट द डिस्काउंट बिफोर द डेमो। ओके, सो पाइथन की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स, वेरिएबल्स। यू विल गेट द डिटेल्स syllabus from our forum DE team. They will provide you a PDF in which all the topics which we are going to cover in the live sections that will be there. Okay, so Python में basic variables types, all the data types, whatever the required for the each and every streams. Okay, and what are the conditional flow, what are the switch case, for loop, generator, functions, classes, and most important thing are oops concept. So oops concept is also very much important topic, so you will understand what is the oops. Even you are working in the C++, Java, .NET, anywhere, right? So oops concept is very much important topics. So here you can understand what is the oops, how to apply it in the industry to oops concept. Okay, and then lot of topics are there where we will discuss in detail in our Python classes. Okay, so in the Pythons we will have around 1.5 month of the course. Okay, it may be stretched up to the 2 months where you will learn from basic to advanced, okay, from zero to hero. So after learning all these Python, okay, so we will get in touch with the data analyst, machine learning, artificial, self development, and backend. So these are the different streams. There are another streams are there, but these are the some of the no heated topics, heated streams are there where you can move in your career. Okay, but at least for covering all those topics you should understand the Python. So to opting any of these streams other than this also, like engineering, data engineering also, you have to come up with all the knowledge. So come to join us our program, come to join us 4th May. Okay, we will discuss, we will interact, we will ask what are the your doubts, what are the your uh, questions, okay, in the live classes. And do contact our team, they will help you a lot. Thank you so much for watching this video. Hope you will join the our live classes. See you soon. Thank you.